फर्स्ट टारगेट श्योरली शुड हैव बीन अबाउट पहली 15 मिनट की कैंडल एक बहुत इंपॉर्टेंट कैंडल होती है. इट बाउंस फ्रॉम हियर, देन इट केम डाउन, तो वो बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन बन जाता है. Welcome back, investors and traders. Welcome to the channel Stock Pro. I'm your host, Dr. Seema Chen, and today I'm going to talk about some very important, pointers in index trading. Or you can make it any, like you can do it for crude, you can do it for, gold, silver, wherever you want, but the volumes need to be high. Today I'm going to be discussing both the indexes and what exactly happened and what is the price, what price was telling us. And about it, I was updating surely on my channel, which is Stock Pro Official. So here is in front of me, you can see the Nifty's future graph, right? Why I have drawn Nifty's future graph? Because the trading happens in the futures. Now see, notice what happened exactly. If you identify in the previous day, on the previous day, what was happening? Nifty was making lower highs, right? Continuously, Nifty was making a lower high. And after that, there was a kind of bounce that Nifty got and closed here. So mostly what do you think would have happened? People must have carried BTST trades in case they need to carry forward. Some of the people must be carrying long positions, expecting market to go up because it has taken a reversal. And some of the people must have thought of selling some put options, right? In either case, let's say whatever may be the case, suppose people carry forwarded the long positions, right? Market is opening gap down. So what will they have to do? They have to book, close their positions, right? They have to, if they're holding calls, they have to book their positions because there could be further fall that can be expected. Okay, that's one scenario. So when it fell, they might have closed their calls. Similarly, there might be people who must be carrying the puts, right? They might have sold the calls. Those who sold the calls, they must be booking the profit. Those who bought the put, they must be also booking the profit. Those who were holding calls, जो लोग कॉल बाय करके गए हैं, वो लोग थोड़ा ट्रबल में होंगे और उनके लॉसेस ना बढ़े, इसलिए उनको कॉल को भी एग्जिट करना है. ठीक है. कॉल राइटर्स खुश होंगे, पुट राइटर्स विल नॉट बी हैप्पी, अपनी ट्रेड को एग्जिट करेंगे. और जहां तक बात है पुट बायर्स की, दे मस्ट बी हैप्पी. नाउ विद दैट सिनेरियो, आई जस्ट वांट टू टेल यू, आप लोगों को एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बताना चाहती हूँ कि जो फर्स्ट कैंडल होती है, पहली 15 मिनट की कैंडल, एक बहुत इंपॉर्टेंट कैंडल होती है. आई एम गोइंग टू मार्क इट्स हाई एंड लो, राइट? आप high and low को देखिए. You can have a look at the high and low of the first 15 minutes candle and you will notice, I'm going to make the time frame little smaller so that you can see it clearly, that Nifty has taken multiple times support from the low of the first 15-minute candle. So the level of 17,050 in futures in Nifty was not broken. And it kept on happening, like once it bounced from here, then it came down second, third, fourth, fifth, sixth time. Like if there is a rule, I don't know how many of you're aware. आप पता नहीं मुझे आप लोगों में से कितने लोग ये जानते हैं कि नहीं जानते हैं. अगर इंडेक्स 4 बार एक जगह से प्राइस रिजेक्शन ले तो वो बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन बन जाता है या स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन बन जाता है. तो निफ्टी ने यहाँ पे 4 नहीं बल्कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 बार सपोर्ट लिया है. 7 बार इस लेवल को ब्रेक नहीं किया है. इसका मतलब एक अच्छी बाइंग की अपॉर्चुनिटी डेफिनेटली इसमें आ रही है. हमारा ट्रेड कब बनता है? हमारा ट्रेड बनता है जब ये इस कैंडल, जहां पे आप देख रहे हो प्राइस रिजेक्शन जहां पे हो रहा है, वहां पे अगर निफ्टी क्रॉस करती है और वॉल्यूम्स आ जाते हैं निफ्टी में, तब हमारा ट्रेड बनता है. आप नोटिस करना चाहें तो आप नोटिस कर सकते हैं कि यहाँ पे देखिए वॉल्यूम्स बहुत ड्राई अप हो गए हैं और जहां पे ये ब्रेकआउट आ रहा है, जहां पे ये ब्रेकआउट आ रहा है, प्रीवियस कैंडल का हाई ब्रेक हो रहा है, वॉल्यूम सडनली इंक्रीज हो गया. This is an indication that buyers are now becoming aggressive, right? आपको मैं यही चीज एक और तरीके से समझाती हूँ कि अगर आप निफ्टी के इंडेक्स में ट्रेड करना चाहते हो
आपको इंडेक्स ही नहीं बल्कि उसके कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन की भी एक्टिविटी को देखना है, ठीक है। तो मैं आपको दिखाती हूँ इसके निफ्टी के कॉल ऑप्शन का चार्ट, और हम जब बात करेंगे तो हम इन द मनी कॉल ऑप्शन लेंगे, तो 17100 का कॉल ऑप्शन ले लेंगे। ये जो मैंने आपके सामने लगाया है मंथ एंड का 17100 का कॉल ऑप्शन है, मंथ एंड का 17100 का कॉल ऑप्शन है। तो जस्ट सी हर, यहाँ पे आते आते कैंडल्स बहुत छोटी कैंडल्स बन गई है। आप चाहो तो इसको हाइकनेशी कैंडल्स में भी कन्वर्ट कर सकते हो। मैंने एक वीडियो बनाया है हाइकनेशी कैंडल्स के ऊपर, एक शॉर्ट बनाया है कि अगर आपको कहीं पे रिवर्सल ढूंढना है, अगर आप ये देखना चाहते हो कि वो रिवर्सल इस पर्टिकुलर यू नो इंस्ट्रूमेंट में आने वाला है कि नहीं आने वाला है, तो आप उसमें डोजी फॉर्मेशन देखिए। तो यहाँ पे आप देखिए डोजी फॉर्मेशंस बन गई हैं, मतलब सेलर्स ऑलमोस्ट एब्जॉर्ब हो गए हैं। अब हमको वेट करना है एक फ्लैट बॉटम कैंडल का। ये 17100 की कॉल है, 123 रुपए पे हमको मिलती है, 123, 24, 125 यहाँ पे कहीं पे हमको मिलती है, 130 रुपए पे मिलती है, और स्ट्रेट आपको 238 पे लेके जाती है। तो ये भी एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट चैनल है, और आप इसको पीई में भी देख सकते हैं। हम 17,000 की पीई लगा के देखते हैं कि उसमें क्या हो रहा है। 17,000 की पीई को भी अगर आप देखते हैं, तो मैं इसको नॉर्मल कैंडल्स लगा के देखती हूँ, तो 17,000 की पीई में आप नोटिस करेंगे कि 17,000 की पीई का जो हाई था, जो आज का हाई था फर्स्ट हाफ एन आवर का, फर्स्ट हाफ एन आवर का जो पीई था, पीई का जो फर्स्ट हाफ एन आवर का हाई था, पहली कैंडल ये है विच इज एन इंडिसाइसिव कैंडल। सेकंड कैंडल ये वाली कैंडल है, आप देख सकते हैं सेकंड कैंडल ये वाली पी की कैंडल सेकंड ये वाली है, ठीक है। और वॉल्यूम्स काफी ज्यादा हाई है, मतलब सेलर्स बहुत एग्रेसिव हैं। और आप और कुछ पॉइंट्स नोट कर सकते हैं टू मेक अप योर माइंड कि जो हाई लगाया है नेक्स्ट टाइम हाई उससे छोटा हुआ, फिर उससे छोटा हुआ हाई, फिर उससे छोटा हुआ हाई, फिर हाई छोटा हुआ, मींस एवरी टाइम इट हैज मेड लोअर हाई। इसका मतलब इसमें एक बड़ी गिरावट की पॉसिबिलिटी है। 80 रुपए से ये जो पुट है उसमें ऑलमोस्ट लाइक 50% का ड्रॉप आया है। 80 रुपए से ये 40 रुपए पे आ गया। सो लाइक हर एक पॉइंट को आपको कनेक्ट करना है, डॉट्स नीड टू बी completely connected. You can't just index trading should always be done when all the dots have been connected. Like for example, I'm saying you check what is happening in PE, and also I want to give you some very important indicators about Nifty, Bank Nifty. You must trade only after 9:45. Either you just trade after 9:15, 9:20 when you have a very strong mindset that you know what's lying ahead, you can trade. But a very nice trade comes only after 9:45, because a lot of algos are working till about 9:45. So after 9:45 you can actually weigh all the pro and con and then take a trade. Okay, so you can, like, you get multiple confirmations. So let me just reiterate everything to you. So I'm going to tell you about Nifty's of first I'm going to look into the Nifty's October contract. Here is the Nifty's October contract. We will have to ignore first candle today, which actually was not a very meaningful candle. The first candle, if you notice, is here. This high and low is not broken. This high and low is not broken almost till like about 11:45. And then the volumes came and gave a good breakout until, if I'm taking the time frame of 15 minutes, until this doji is formed, and then it started going down. How I would prefer to trade, go to the shorter time frame and see what is happening in Nifty. And see here, Nifty is taking support from the same place. 5-6 times Nifty has taken a support. So that means we have a very early entry. We have an entry at about 1770 with a stop loss of about 1750. That means 20 points stop loss. And look at the rally that has come. First target surely should have been about 14,140, and after 17,140, you had a straight flight of another 130 points. So that is how you can trade. So as I told you, so first you will look into the price action of Nifty,
in 5 minutes, in 15 minutes. Then you have a look at what is happening into the Nifty's option chain. So see here, this is Nifty's 17100 call option. If you, as I told you, you can put the high Kanishi candle. That will give you quite clear indication. You need to see a very clear doji formation, and the low of the doji is going to be a stop loss. 103 is your stop loss. Your entry comes above 112 or 113, and look at the target that you get, almost like 240. That means about 120-30 points you get. सो सिंपल मेथड्स मैंने आपको बताया. पहले आप निफ्टी के प्राइस को रीड करिए, फिर उसके कॉल के प्राइस को रीड करिए, फिर आप उसके पुट के प्राइस को रीड करिए, सारे डेटा पॉइंट्स को कनेक्ट करिए, डॉट्स को कनेक्ट करिए, और उसके बाद आप अपना ट्रेड लीजिए. सो अगर आप अपना पैसा लगा रहे हैं किसी भी इंस्ट्रूमेंट में, किसी भी स्टॉक मार्केट के किसी भी वोलेटाइल इंस्ट्रूमेंट में, तो आप जितने मल्टीपल आप कंफर्मेशन ले सकते हैं, उतना बेटर आपके लिए रहेगा. तो ये एक मेरा छोटा सा वीडियो था अबाउट प्राइस. सो आई टोल्ड यू, फर्स्ट यू चेक निफ्टी, you can check Nifty cash, you can check Nifty futures, you can check Nifty's call, in the money call, in the money put, and see what is happening in the price. I have shown you what was exactly happening in the Nifty's put. If I just tell you what was happening in the put, you will be able to see it more clearly, that the put was pretty much under stress. Put was pretty much under stress. So this high was made at about 925. After that, every single high was lower. That means I want to understand from you all who are watching my video, what do you infer from here? Who's aggressive? Who's doing what activity? So almost like till about 11:10, you have a clear idea what lies ahead. Okay. And again, I would like to tell you that the first candle every time is extremely important. Let me explain you with respect to Bank Nifty, what happened in Bank Nifty. Here is Bank Nifty, right? So this is Bank Nifty's future. You can put the time frame as 15 minutes and see what happened with respect to the price action. This is the candle. This is the candle. This is the first candle which you see on your screen, and the first candle's low was not broken. And after that, once this high is broken, it went till what point? Till the previous day's high. So price actually tells you all about, like if you are taking a target, you should be ready to book a profit over here. And when you see a doji, it's definite sign that market is going to come down. So this is my video on price action. अगर आपको अच्छा लगता है तो please give a thumbs up, and I'll keep on making similar videos, and keep liking, keep sharing my videos with others, and do join me for live trading every day from 10 to 11. Let's make money together. All the best. See you in the next video.